Welcome back, everyone. Good to see you. We are going straight to Banaras. This is where Prime Minister Narendra Modi is holding a massive roadshow. There you see pictures of him in a saffron topi, adjusting it in a sea of people. And I, you know, from a security point of view, I can say that this is such a security nightmare to have 3 lakh people, you know, have this open roadshow passing through a very narrow, congested lane. And you know that Kashi is a city with very many narrow and congested lanes. So there you have it, the Prime Minister there, his cavalcade moving on, his roadshow moving on, doing a namaste to his constituency. A constituency that has, Shivani, you're joining us from the mighty ghats of the mighty Ganga on a boat. Good to see you this evening. We are seeing the Prime Minister's roadshow underway, and it's good to see you smiling there as well. What have people been telling you? You know, this is a final push. Before the 7th phase of elections. This, of course, is the Prime Minister's own constituency. You've been reporting there for the last 1 week now. What are people telling you? Well, when it comes to Kashi, of course, Prime Minister Narendra Modi is like the adopted son. He is the son of Gujarat, but here, of course, they consider him their adopted son. Shreya, I'm on the river now. You were talking about the narrow, congested lanes of Varanasi. What is not narrow is Ma Ganga here. And you can see a lot more boats than, you know, were earlier visible on Ganga here along the ghats of Varanasi. A lot of people enjoying lovely evening sun here. And of course, you know, enjoying their visit to the Kashi Vishwanath Dham. And their boat rides here. I see people of all ages. You can see behind me, there are a lot of people who are enjoying their time. I'm going to go and try and talk to them. Let me see if I can get across to their boat and talk to them as well. आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं. कैसा लग रहा है काशी में? बहुत सुंदर लगा. आज मोदी जी की रैली है तो जरा रोड वोड सब ब्लॉक है. हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन फिर भी फिरा दिया लोगों ने. अच्छा. और आप गए काशी विश्वनाथ? वही दर्शन करना है, सुबह ही करना था, लेकिन वो रैली के कारण हमको बोला यहाँ रोड बंद है, वहाँ रोड बंद है. फिर अभी हमको मिल रहा है, अब हम जाके दर्शन करेंगे काशी. जी. What about you? Is this your first visit here? Yeah. And how is it? It's pretty good. Yeah, you liked it? Yeah. Let me just try and go across to the guests who are here. कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा है. मैं पहली बार आया हूँ. ऐसा लगा कि यहाँ पे आज की तारीख में मोदी लहर चल रही है. अच्छा? ये लहर के अलावा मोदी लहर ज्यादा चल रही है. आपको लगता है? तो बहुत भयंकर लहर चल रही है. हर गली गली में ये रास्ता बंद, वो रास्ता बंद. इसलिए यहाँ से हमको वहाँ पे वो घाट पे जाने का है. इसलिए रोड शो चल रहा है इसलिए. यस. और मोदी तो आने वाले हैं, लेकिन ये लहर है ना, भयंकर लहर है. ये पानी की लहर से ज्यादा मोदी की लहर दिख रही है मुझे. आप मतलब बोल रहे हैं पॉलिटिकली मोदी की लहर चल रही है? भयंकर. ऐसा लगा यूपी इलेक्शन में. यस 100%. ऐसा क्यों? ओके, वही आने वाले हैं यहाँ पे. उनकी जीत होने वाली है. और क्या होने वाला है? विकास करेंगे तो वही आएंगे. मोदी जी ने इतना विकास किया है तो क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? मोदी जी ही आएंगे. तो वो तो एमपी है यहाँ के. अरे भला है, लेकिन वो सेंट्रल में बैठे हैं. अच्छा. फिर जहाँ पावर है वहाँ पे सब कुछ है. पावर है मेन सेंट्रल का. So there you can hear the people very clear about the concept of the double engine sarkar that Narendra Modi and Yogi Adityanath talk about. That's their big pitch, isn't it? That double engine sarkar, which means that Narendra Modi at the center and Yogi Adityanath as the chief minister, the center scheme and the state schemes, the delivery of those schemes is very key. Would you like to add something, Uncle? First of all, your experience. We went to Allahabad yesterday. It was a fantastic road. Achha. And the taxi wala, all the auto rickshaw walas, etc., all of them have been praising Modi, and the fact that lot of their problems, past problems, have been removed. So I think, as he said, Modi leher to definitely chal rahi hai. Achha. Anything by you? Young women, what are the issues for you this election? It's my first trip here, but it's good. It's good? It's been good, yeah. So, do you believe that, you know, Varanasi showcases what is possible in India if there is will, if there is commitment? Yeah, surely. Yeah? Yeah. Anything you want to add? हम लोग कलकत्ता से में कलकत्ता से आए हैं. बहुत पूरी दुनिया पूरे देश से सब लोग यहाँ आए हुए हैं. Any comments? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. अच्छा लगा? बहुत अच्छा.
So, what are the issues that people are really looking at? There are people here who are talking about a wave for Narendra Modi, and I think that in itself shows you that Narendra Modi is indeed the factor that everybody, there's no way to overplay it. But of course, the BJP banking on it with his roadshow going along. He's going to be going to the BHU, etc. Possibly attend the RT here as well, and that is why there is that Narendra Modi factor, because across the country, but specifically in Varanasi, people are associating with him. आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं, तो आप बताइए कि यहाँ क्या बदलाव हुआ है? हर तरफ बदलाव है। क्या? मैं बचपन से यहाँ हूँ। हाँ। और बिजनेस के और नौकरी की वजह से बाहर रहा। अच्छा। काफी समय तक। हाँ। बहुत 2-3 साल बाद जब मैं अचानक आया घर। हाँ। और ये बाबतपुर वाला रास्ता वगैरह देखा। हाँ। मैं सरप्राइज हो गया, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा, सड़कें बन गई। ये सड़कें देख के कहीं मैं किसी और स्टेट में नहीं हूँ, किसी और स्टेट में नहीं। सच में या ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? यही सत्यता है। आप भी यहीं से हैं क्या? मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, मैं यहीं से, मैं बचपन में यहीं पला बढ़ा, यहीं में पैदा हुआ हूँ। यहीं से। तो योगी सरकार के काम से खुश हैं? मोदी जी से मैं खुश हूँ। Acha. See, that's the telling statement. Modi ji is the factor here when it comes to Varanasi and across Uttar Pradesh. So when you talk to people here, you really get a sense of why Narendra Modi factor is so big. And there are more and more people who are coming here. But आप मुंबई से हैं, तो आप कैसे बता रहे हैं कितना बदलाव हुआ है? बदलाव ऐसा लगा, मैंने आज पहली बार देखा कि ये 10 साल पहले आई थी ना, उसने इतने खराब रास्ते देखे थे इसने, लेकिन इतने अच्छे रास्ते देखे ना, उसको विल्यूम नहीं होता। मैं यहीं पे आई हूँ 10 साल पहले। आंटी के बारे में बता रहे हैं? अच्छा, आप 10 साल पहले आई थी तो बहुत बेकार था, और आज तो अभी नीट एंड क्लीन, इतना चेंज मैंने गन्ना में फर्क देखा आपने? बहुत ज्यादा फर्क। पहले बदबू आती थी। बहुत, अभी बहुत फर्क आया। सवाल लेकिन ये जो गंगा की जो लहरें हैं, आज मोदी के सामने फीकी पड़ गई, क्योंकि मोदी ज्यादा वहाँ पे लहर भयंकर बसा रहे हैं वहाँ पे बाहर रास्ते पे। तो आप और भी उम्मीद रखती हैं, क्योंकि अभी यहाँ वाराणसी में सिर्फ ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ है, थोड़ा बहुत जो कॉरिडोर था उसमें जो संकरी गलियां थी उसको बदला गया, लेकिन और भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरत है। थोड़ा गंगा को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, और भी मतलब ये हमारा मेन सिटी है वाराणसी, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो हमारा इंडिया में नाम होना चाहिए इतनी अच्छी जगह का। So that's the sentiment here, Shreya. I'll toss back to you. You heard the people themselves, so I don't need to add anything more onto it. Prime Minister Narendra Modi is here. The roadshow crowd clearly shows what the Narendra Modi factor is, and you can possibly forget everything else. As far as the BJP government here is concerned, the BJP government at the center is concerned, it's Modi all the way. It is Modi all the way, you're saying, Shivani. Thank you very much for getting us that report from the banks of the river Ganga. Do join Shivani. She is joining you once again at 6:30 to get you a special show from Banaras. Mr. Ghosh, I have exactly 1 minute as I wrap this show. I want to ask you, we've already spoken about the import and the impact of this roadshow and of Mr. Modi as well. But Shivani was speaking to some people. One of them in Banaras was from Banaras itself. And he's talking about Vikas, he's talking about development. By the way, I know the road that he's talking about. Anyone who's been, unfortunate enough to travel on that road, it used to be a complete nightmare. I believe that road has now been completely fixed. I want to ask you this. In India, every time there's an election, people say, when India votes, when you go to cast your vote, you vote your caste. Is that strictly correct? See, Shivani, there are sociological studies like Mr. Dipankar Gupta, which is one of the leading sociologists from JNU. He had said that, it's not really that correct, because even the whole